Concepts that excite, ideas that deliver, policies that perform. अगर आप वेल्थ के साथ वेलनेस चाहते हैं तो भारत में आइए। Budget 2018 will not only assess economic milestones but also pave the way for higher economic growth. भारत ऐसा देश हो जो निराशा से मुक्त हो, आशा से युक्त हो। Watch Rajya Sabha TV special shows for good and simplified coverage of the budget. नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से और लगातार चर्चा कर रहे हैं बजट आपका। जी हां, आपसे ठीक 1 घंटे के बाद संसद में आम बजट पेश होगा और चर्चा ये कि इस बजट के पिटारे में क्या कुछ निकलने वाला है, क्योंकि ये इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है इस सेशन में और इसके बाद जो बजट होगा वो अल्पकालिक होगा। इससे ये भी संकेत हैं कि क्या चुनाव जो अगले साल हैं उसको ध्यान में रखकर बजट में कुछ खास प्रावधान है या फिर 2018 में 8 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें भी कुछ इसमें तरजीह दी गई है या सुधारवादी रास्ते पर सरकार आगे बढ़ती नजर आएगी। इकोनॉमिक सर्वे की चिंता बजट में कितनी दिखेगी और उससे दूर करने की कोशिश बजट में कितनी की जाती है, इन्हीं सवालों के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही चलेंगे पार्लियामेंट, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद होंगे जो बताएंगे कि इस वक्त वहां पर क्या हलचल है। मेरे साथ मेरे सहयोगी फ्रैंक हैं और साथ ही साथ अरुण साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एसके जिंदल साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन है एसोसिएशन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल मार्केट से। जिंदल साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। और अश्विनी कुमार हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अश्विनी, आपका भी स्वागत है। अश्विनी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि बजट जिस तरीके के हालात रहे हैं और जो अब तक का सफर रहा है सरकार का, इंटरनेशनल रेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फिस्कल डेफिसिट, उससे अलग एक तरफ चुनाव अभी कुछ राज्यों में और अगले साल आम चुनाव, आपका टेक क्या है? क्या रिफॉर्मिस्ट बजट आप उम्मीद कर रहे हैं या फिर पॉपुलिस्ट? देखिए जी, आपने जब कहा कि पॉपुलिस्ट बजट, तो मुझे नहीं लगता पिछले 4 साल का अगर हम सोचें तो सरकार ने इस तरह से सोचा है कि हम बहुत पॉपुलर पॉलिटिक्स या पॉपुलर बजट लेकर के आएंगे, ऐसा मुझे नहीं नज़र आता। लगातार सुधार किए गए हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के लिए उन्होंने कमेटी का बनाना हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन के थ्रू हो, तो लगातार जो सुधार किए गए हैं उससे जो मुझे लगता है ये बजट भी डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट होगा। और मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक हम सुधार की बात करते हैं तो अगर इकोनॉमी में सुधार होता है तो वो ऑब्वियसली इकोनॉमी के लिए ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए अच्छा ही है। Are you suggesting that because the present government is not looking at it as its last full budget, but also 5 more budgets to come probably? Maybe that is true. Somehow that is true because they feel that 2022 is the destination point for so many schemes. They feel that up to 2022, the 75 years of independence, the economy will be reaching at that portion. Okay. So they are targeting at that level of economy, not right now. So what I feel, this government is not focusing on short-term things. They are focusing on long-term things only. So in that way, I think direction is good. And in this budget also, I don't feel that budget is fulfilling the aspiration of individual things. जिस विकास के रथ पर सवार है सरकार, उसी पर आगे बढ़ने की कोशिश, दौड़ाने की कोशिश इस बजट में देखेगी। मुंबई चलते हैं, अमृतांशु राय हमारे साथ हैं। अमृतांशु, बहुत ज़्यादा चर्चा भी है, उम्मीदें भी हैं, लेकिन औद्योगिक नगरी और माया नगरी में क्या उम्मीद करती है वहाँ की उद्योग नगरी से जुड़े लोग और खासतौर पर मार्केट क्यों किया है? और इशारा जो कर रहा है मार्केट, वो ऐसा लगता है कि शुभ संकेत है क्योंकि काफ़ी कुछ ऊपर जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। बिल्कुल कविंद्र, मैं आपसे हिंदी में ही बात करता, लेकिन मेरे गेस्ट अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, इसीलिए मैं अंग्रेजी में ही इनसे बात करूंगा। मेरे साथ हैं सीआईआई के चेयरपर्सन मिस्टर निनाद करपे। मिस्टर निनाद करपे, सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द इनिशियल एस्पेक्ट, डू यू एट ऑल फील दैट दिस बजट इज गोइंग टू बी अ पॉपुलिस्ट वन? It will be a mix of some populist measures and some pragmatic measures. I think it will probably, if I could
think of what it could possibly be. It will be practical populism is what we will probably see in this budget. How do you see? How do you actually extrapolate the word that you used? So we will have, genuine problems of, let's say, agriculturalists, genuine problems of middle class, genuine problems of people who do not have and cannot afford a good standard of living addressed in this budget. At the same time, the momentum of 7 to 7.5% growth has to be sustained. Right. So it both will have to, this twin engine theory will have to work this time. It'll have to go hand in hand, you're saying. Right. Also, the markets are not really very anxious about the whole budget thing. Is it that they've factored in most of the issues, or they're just not concerned? How do you see it? No, they are concerned. I think budget the relevance of budget is more of statement of intent now, what the government wants to do and is planning to do. So yes, every statement is watched carefully. But by and large, the markets expect the budget to be positive overall for the industry and economy, overall. The agri sector and the infrastructure sectors, the stocks, have really been doing well in the first part of the opening, post-opening. How do you see that? What is it? What is the indication there? Infra is all good news. The government is going to give a big push in this budget as well. We're going to see a lot of push. This government has taken infra as a very, very focus area. So obviously infra, we will see good news only. Agri, let's wait and see what we can see here in the budget. But yes, obviously expectation is that. Go across to Parliament where these are live visuals coming to you. Prime Minister, of course, on your screens there, along with the Foreign Minister, Sushma Swaraj. We'll keep bringing you these, these live visuals from Parliament and elsewhere. We cannot, of course, take those visuals away because they are very important visuals and we need to know what's really happening there in Parliament. But before we go across to Parliament to our correspondent, Vineet Dixit, let's go back to Amritanshu and let him complete the point that he was making there. Very much. Over to you. Okay. Oh, you still with me, Frank? I thought you'd switch me over. So, Ninad, the last point I was asking you was, how do you think, what is the extent to which they can really provide for agriculture? You know, I think in agriculture, whether it's in terms of soft loans, whether it's in terms of providing support for inputs for agriculture, whether all these things, I think there may not be one big bang thing, but a lot of the small things will happen, whether you provide, particularly in this budget. The flagship schemes, you're saying? Flagship schemes also will get a boost in this budget. And on the infrastructure side, you really see a lot of spending. That's what you mean by push, right? That's right, yeah. I think there will be further commitment to more spending, and that's what we're going to see in this budget, hopefully. So that's what you have from the CIA station here in Mumbai. Frank, over to you. All right. Thank you, Amritanshu, for bringing us that update there from Mumbai. TK Arun, we heard what, the panelists from Mumbai had to say. As far as the budget is concerned, don't expect anything big bang, but you'll find some small things for everyone. See, every fifth budget of a government is a special budget because that's the election. And it has been historically true that the election year budget has always been slightly more expansive than the previous ones. It has been more like a manifesto, right? From 1988 to 89. We are a democracy and government responds to the people. So there will be an attempt to please people. Now, other things are actually beyond the budget. The GST is outside the budget. It's a big, very big reform. The NCLT process, the Insolvency and Bankruptcy Code, it's outside the budget. It's a big reform. Banking recapitalization will be part of the budget. That's only one part of the story. Bank reform that has to take place, that will be outside the budget. So the budget is not something where, all the reforms of the government will be showcased or can be presented. So many things will be there, some things will be outside. So reform is a continuous thing, it will happen. Sure. General sir, आपकी नज़र में और क्या कुछ इंडस्ट्री इस वक्त उम्मीद कर रही है इस बजट से? इंडस्ट्री क्योंकि ये लास्ट बजट है इस सरकार का इस सत्र के लिए, तो मैं ये मानता हूँ कि वो सभी की उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और जिस ग्रोथ के साथ हम चल रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया था खुद ही, उस ग्रोथ के पाथ को बदलने का मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें हमें आशंका होनी चाहिए। उसी पाथ को और ज़्यादा फ्यूल करना पड़ेगा उसको और तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए। जो स्टेप्स जहाँ तक हम अचीव कर सकें, अब उससे आगे चलने के लिए कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। वो मैं इस बजट में देखता हूँ
कि वो इसकी डायरेक्शन को और आगे कैसे तेज़ी के साथ ले जाएगा, वो इसमें तय होगा, वो अनलीश होगा कि ग्रोथ स्टोरी, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये एक सिंगल पॉइंट है जिसके ऊपर बड़ा फोकस या बड़ी पिक्चर उसी पे बनेगी, उससे नहीं हटना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी हैं वो साथ साथ में आ जाएंगी। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहा तो बाकी सारी चीज़ें जैसे एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी अपने आप लाइन में आएंगी अगर हम उसको पकड़ के चलते हैं तो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो प्राइवेट सेक्टर फिलहाल पीछे दिखता है सरकार से, उसको कोई स्पेसिफिक सेक्टर आपको लगता है जहां पर कुछ इंसेंटिव की जरूरत है, इसके चलते एक बूस्टर का काम कर सकता है? वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में अभी हलचल देखी गई है, हाल ही में उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। उसमें देखा गया है कि अब डिमांड बैंक्स में आ गई है और नए लोन लोग लेना चाहते हैं। लेकिन उसमें मेरा ये सोचना है कि जो हमारी सप्लाई साइड है उसमें जो बॉटलनेक्स हैं पहले हमें उनको रिमूव करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी कैपेसिटीज़ और बढ़ा लें। वो सप्लाई साइड को जो बॉटलनेक्स है उसको अगर हम हटा सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। और अभी कैपेसिटी को बढ़ाने का मैं इतना ज़्यादा महत्व नहीं देना चाह रहा। You know, we are joined by Himanshu Baid, Managing Director, Poly Medicure Limited, on the program as well. Let's go across Himanshu and find out what are his expectations from the budget and what do you think the message from this budget is going to be? Well, you lost the line there with Himanshu Baid. We'll try and go, rejoin him and get his feedback on that. But let's take the discussion forward now. Ashwani Kumar, you know, the economic survey has listed out a few risks, has highlighted a few risks. Now, do you believe that we should be concerned about the risks highlighted by the economic survey, and how do you think that these risks are going to be addressed by the finance minister? I think some global risk we cannot address it right now. For example, whatever is said about oil prices, if you feel that oil prices are increasing in such a way, in a big way, then obviously it will have a negative impact on current account deficit and will have a cascading effect on inflation also, because if you increase diesel prices continuously and cannot reduce the price level for customers in that way, and if you reduce the price level for customer again, it will have negative impact on fiscal deficit. So either you pass on all the price hike to the customer, then again increase in diesel prices will have negative impact on inflation rate. So inflation, international oil prices, current account deficit, and even in particularly at that level where stock market is at so high level, where disinvestment can be a major way to reduce current account deficit. Will it be a hindrance to growth? Because the economic survey has said that we will grow at 7 to 7.5% in the next fiscal. I think it will not be so much problem, because what I feel that even in an international market, oil prices will not be going so much high. It won't touch at 80 or more than that one. I think it will remain around 70 or 60 to 70 range. Then if you feel that the whole stock market is up, and if we meet our target of disinvestment, that means particularly can we arrange non-tax revenue, right. And if we manage tax revenue, because GST will be stabilized after some time. So if we increase the base of indirect taxes through GST and direct taxes through demonetization, so increase in tax revenue in future and increase in non-tax revenue, particularly through disinvestment, then I think more growth-oriented budget will be there. Sure. Okay. Then obviously government can raise more resources from there. For youth, ठीक है, IT सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट का खासा जोर है और डिजिटल इंडिया की तरफ लगातार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। What do you feel कि इस बजट में कुछ स्कीम्स इस तरह की है, इनको और कैपिंग जो थी इनको और बढ़ाने की कोशिश हो सकती है? You know, unless there is something specifically intended to promote exports or these sectors, I don't know what they can give. The biggest hindrance to exports right now is the exchange rate. There is a feeling that the rupee is overvalued. Now, the budget cannot directly address the exchange rate. That is more in the remit of the RBI. Right. If you allow more and more foreign capital to come into our debt market and the bond market, which has been happening in the past, then this capital inflow will push up the exchange rate, and that will harm the real economy, which has been happening. And the economic survey actually blames the higher than warranted interest rates for allowing this to happen. The carry trade, you know, the interest rates in Japan are so low, you can borrow money for less than 1% and bring it and put it in Indian bonds where you get more than 7%, 7.5%.
even if the hedging cost is say 5%, 6%, you have a clean profit. Sure. So this is being taken advantage of by carry traders, and unless we shut this window out, you'll see the real economy suffer, our exports suffer, to benefit a few people who gain from the bond market operations. You know, our correspondent Vineet Dixit is standing by in Parliament. Let's go across to him and find out what the mood is like in Parliament and what's happening there. Over to you, Vineet. Well, Frank, the cabinet meeting has started about 10 minutes back. It's just started about 3 rooms from here, third door from where we are standing. We have been asked not to speak loudly, otherwise we'll interfere into the cabinet meeting. It started sharp at around 10:15, and it's about to last a couple of more minutes. Prime Minister is there. The only agenda of the day is to approve the Finance Bill 2018, Frank. And 3 parts, the main speech of the Finance Minister will be in 3 parts. I'll read out to you. Macroeconomic framework statement, medium-term fiscal policy statement, and the last is fiscal policy strategy statement. These will be the 3 parts. 3 भागों में ये रहेगा पूरा फाइनेंस बिल, और मीटिंग जैसे मैंने कहा आपसे शुरू हो चुकी है, ठीक 3 कमरे पीछे ही हो रही है. And it's about to last for another couple of minutes before the House assembles and formally takes up the Finance Bill 2018. Frank. जी, आप क्योंकि पार्लियामेंट पे हैं, सांसदों से मुलाकात हुई होगी आते आते. इस वक्त जो चर्चा है, क्या कुछ बड़ी स्कीम्स, कुछ बड़ी घोषणाएं जिनके बारे में पार्लियामेंट के गलियारों में इस वक्त चर्चाएं हो रही हैं? गया नहीं शायद. Connect. Okay. चलिए, शायद we seem to have lost the line there with Vineet Dixit. That's what live TV is, and we are live right now, bringing you all the details as far as a budget is concerned. We're trying to simplify it, of course, for you. Yes, Kavindra. ठीक है, ईज ऑफ लिविंग की बात हो रही है, और जो कि मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री कई मौकों पर इसका जिक्र भी कर चुके हैं इस दिशा में, क्योंकि आम चुनावों से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट होगा. तो ऐसे में सोशल सेक्टर को लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि पिछले हमने देखा है कि एक लगातार उस तरफ फोकस रहा है, इससे पहले की सरकारों को जरूर आता, लेकिन एग्रेसिव तरीके से जिस अप्रोच के साथ सरकार आगे बढ़ी है, इस बजट में क्या कुछ और नई चीजें या उसका और दायरा बढ़ाने की कोशिश, फंड एलोकेशन के मसले पर कुछ स्पेस? See, if you talk about ease of living, these things are not determined by the budget. If there are communal riots happening in Uttar Pradesh, if there is a vigilante violence in the name of the cow, these are not anything to do with the budget. So these are the kind of things that are disrupting public life. Every day we hear about women being attacked and sexually assaulted, being kidnapped, raped. No, these are not things to do with the budget. Not directly. At one remove, they are affected by the budget. So for the government to improve living standards on these grounds, they have to go outside the budget and act tough against lawbreakers and make it very clear, no vigilante activity will be tolerated. So these are the kind of things we require to improve life. How crucial will policy vigilance be in the coming year? See, policy vigilance, what is the policy vigilance that the budget targets? That's the fiscal restraint. There cannot be too stringent a fiscal restraint in this year, which is only natural, and there is no need for it. Like I was saying, there is no investment happening by the private sector, not significantly. So they have spare savings available. If the government takes that savings and carries out investment on its own, it will increase the fiscal deficit, but it will boost the economy, which is what everybody wants. So that will crowd in private investment rather than crowding out private investment. So I think we shouldn't worry too much about the fiscal deficit this year. और जैसे कि जो विनीत से मैंने सवाल पूछा था कि पार्लियामेंट में क्योंकि इस वक्त सांसदों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो जाहिर है कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, उम्मीदें हैं. हमारे संवाददाता रवींद्र सिंह शिवराण वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने बातचीत की कुछ ऐसे ही सांसदों से. आइए देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे थे. बजट से जुड़े तमाम कागजात जो है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अभी संसद भवन में आ गए हैं. आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो बजट है काफ़ी महत्वपूर्ण इस बजट को माना जा रहा है, और ये बजट
के कागजात जो है वो यहाँ पर रखे जा रहे हैं और इसमें सब जानकारी है, डिटेल है कि आने वाला जो बजट है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण इस बार आम आदमी के लिहाज से, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से और आम आदमी किसान के लिए क्या क्या खास होने वाला है। ये बजट काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि अंतिम ये बजट है इस सरकार का जो पूर्ण बजट है। इसके अगली बार जब होगा तो क्योंकि चुनावी वर्ष होगा और इस बार ये आखिरी बजट है, हालांकि इस बार भी 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उस लिहाज से माना जा रहा है कि आम आदमी को राहत देने वाला ये बजट होगा। तो रवीश शिवराणा बता रहे थे कि जो बजट की प्रतियां पहुंची हैं उसके बारे में और जो लगातार प्रोसीजर हैं वो उसके बारे में चर्चा हो रही है। जिंदल सर कि एक और फैक्टर जो दिख रहा है, इंटरनेशनल सिनेरियो जिस तरीके से जो एक अलग अलग फैक्टर हैं, वो बजट को इस बार कितना प्रभावित कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट बजट पर दिख सकता है और उससे बचने के लिए सरकार या वित्त मंत्री के पास क्या कुछ टूल्स दिख सकते हैं? देखिए, जो अभी आपने हाल ही में देखा सरकार का इंटरनेशनल मार्केट्स के प्रति रवैया, इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच उनका रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बजट के अंदर भी उसका ध्यान रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का फ़्लो ऐसे ही बना रहे ताकि ये मिलजुल करके हम विदेशियों को भी वो ऑफ़र कर सके जो हमारे पास संभावनाएं अवेलेबल है, वो भी उसका फ़ायदा उठाएं और मिल करके जो सिनर्जी बनती है, एक वो जहाँ पर उनके पास संभावनाएं कम है उनके अपने यहाँ पर, हमारे यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, 125 करोड़ 130 करोड़ लोग हैं, तो उन सब चीज़ों का उनको बहुत ही चाव रहता है कि इतनी बड़ी मार्केट के अंदर हमें अगर एंटर करते हैं या वहाँ पे रहते हैं तो उनके ग्रोथ का बड़ा अच्छा संभावना उनको रहती है। तो वो संभावनाओं को लेकर के दोनों के बीच में बहुत अच्छी सिनर्जी बनती है और सरकार, मैं देख रहा हूँ कि उस तरफ पूरी तरह से कारगर है कि भाई उनको वो डायरेक्ट डायलॉग भी करे। जैसे अभी डावोस में प्रधानमंत्री जी खुद गए और उन्होंने उनके साथ सीधा बातचीत लेकिन वो उस प्रोसीजर को आगे बढ़ा रहे। मेरा सवाल ये था अश्विनी आपसे, ये सवाल कि जो इंटरनेशनल फैक्टर हैं इकोनॉमी के लिहाज से या फिर रेट कट जिसकी बात टीकर साहब ने की, कि वो कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं आज जो बजट में घोषणा या जो सरकार इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने जा रही है? कुछ हद तक वो असर डालेंगे क्योंकि जब भी आप भारत का बजट बनाते हैं और जब आप कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी जब आप अडॉप्ट करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि सिर्फ यही एक उपाय बचा हुआ है जहां पर आप निवेश को रिवाइव कर सकते हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में उतना स्कोप है नहीं। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेंटेन रखें। अगर यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज करते हैं तो इवन कैपिटल आउटफ्लो स्टार्ट हो सकता है और फिर जिस तरह से टीके अरुण जी कह रहे हैं कि वो पॉसिबिलिटी है कि अगर कैपिटल आउटफ्लो स्टार्ट होता है तो स्टॉक मार्केट पर भी थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा और रुपये भी डेप्रिशिएट हो सकता है। मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि जिस तरह से वर्ल्ड मार्केट ग्रो कर रही है, इस बजट में पॉसिबिलिटी है कि हम एक्सपोर्ट सेक्टर पर ज़्यादा टारगेट करेंगे। कुछ पैकेज एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए होंगे, जिस तरह से लेदर और टेक्सटाइल के लिए लास्ट के बजट में हमारे लिए पैकेज रहे थे। बहुत सारे कुछ ऐसे सेक्टर चूज कर सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जहां पर कि आप जॉब भी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं और इकोनॉमी को ग्रो भी कर सकते हैं और वर्ल्ड मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हाई एक्सपोर्ट की वो हम टैप कर सकते हैं। तो हमारे लिए वो एक अवसर भी है। उस अवसर को वो कितना इस बजट में करवा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। चैलेंजेस हैं लेकिन साथ में अपॉर्चुनिटीज भी हैं। चलिए, चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटी भी है, दोनों है और सामंजस्य बैठाना देखना अहम होगा कि कितना सरकार बिठा पाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत की है। 8 फरवरी तक दिल्ली में चलने वाली इस प्रतियोगिता का कल शुभारंभ हुआ और इसीलिए उभरते खिलाड़ियों को भी आम बजट से खासी उम्मीदें हैं। इनका कहना है कि खिलाड़ियों को गांव और जिला स्तर पर भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हरियाणा के पानीपत जिले में बुआना लाखू गांव को खेलों की नर्सरी कहा जा सकता है। खास तौर पर कुश्ती और बॉक्सिंग की यहाँ पर एकेडमी चलती है। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं और नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेलने की इच्छा रखते हैं। उनमें से कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो वित्त मंत्री से बजट 2018-19 से किस तरह की उम्मीद रखते हैं। आप अपना नाम मुझे बता दीजिए, आप यहाँ कोच हैं? मेरा नाम नरेंद्र मलिक रेसलिंग कोच है, जिसका कि अभी खेलो इंडिया के तहत गांव बुआना लाखू के अंदर एज ए रेसलिंग कोच मेरा सिलेक्शन हुआ है। गवर्नमेंट वैसे खेलों की तरफ काफी अच्छा ध्यान दे रही है। पहले जैसे कि 6 लाख रुपए था, हाई लेवल पे जो
खेल जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर ओलंपिक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, तो उनके अंदर क्या है, उनके अंदर मेडल लेने वाले खिलाड़ियों को 6 लाख रुपए देती है। तो पहले गवर्नमेंट थी, उनसे बढ़ा के गवर्नमेंट काफी अच्छा कर रही है, लेकिन जो नीचे लेवल पे है उनकी तरफ थोड़ा कम ध्यान है। जो पहले क्या होता था, पहले एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों को खेलने जाते थे तो उनको 100 रुपए मिलते थे, तो वो 10 साल से वही 100 रुपए मिलते जाते। आप ये कह रहे हैं कि गांव के स्तर पर, जिला के स्तर पर भी प्रोत्साहन बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन खेलो इंडिया के तहत अच्छा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप बताइए, आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र है जी। आप किस तरह की उम्मीद करेंगे, क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा कि जहाँ भी बच्चे रेसलिंग या कोई भी गेम करते हैं वहाँ पे हर तरह की सुविधा दी जाए। अभी यहाँ जैसे इस नर्सरी में छोटे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ ना कोई हॉल की सुविधा ना कुछ है। बड़े बच्चे जब थोड़े ठीक तैयार हो जाते हैं, ऐसे काफी बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, जब वो अच्छे तैयार हो जाए तो उनके पास कोई वो नहीं होता, उनको रेसलिंग हॉल की सुविधा नहीं किसी तरह की, तो फिर यहाँ से निकल के भागते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटे बच्चे इतने अच्छे हैं कि भाई हरियाणा में कहीं भी नहीं है जी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस एकेडमी में कम से कम लोगों का ये मानना है कि खेलो इंडिया के तहत सरकार ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है खिलाड़ियों को, लेकिन गांव और जिले के स्तर पर और खेल सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। कैमरामैन संतोष के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, पानीपत। Well, there you have it. We heard the expectations from the sports people of the country. Of course, the sports persons want better infrastructure so that they can compete at, at extremely high levels. TK Arun, quick reaction before I let you go. Khelo India initiative, a great initiative started by the government, and we hope that it will bring laurels to the country as far as sports persons are concerned. But the bottom line at the end of the day is infrastructure, isn't it? Even the sportsmen and women wanting infrastructure so that they can compete at the highest level and be ready at the highest level. Absolutely. Unless the economy grows, people have nutritious food. You cannot really have a sportsman of global class. So everything is dependent upon growth, sustained growth, reaching out to people at large. And that will determine our sporting performance. And this is the experience around the world. In some specific intervention in terms of providing, training facilities, the physical infrastructure, tracks, etc., these all will certainly help. But all that is possible when the government has the money to spend on that. You need fiscal capacity, and for that you need better growth. So growth is the ultimate determinant of even your sporting success. Sure. All right. TK Arun, I know you have to leave us now. Thank you for joining us on the program and sharing your expertise on the budget itself and what to expect from the budget. Meanwhile, of course, our correspondent Kriti Mishra spoke to CIA President Shobhana Kamineni on budget expectations. She laid emphasis on job creation. Let's take a listen in. Finance Minister has already said that this budget is not going to be a populist one. And also Economic Survey has set the tone for a budget, for a bold budget. Your expectations, ma'am? I think that fundamentally we are working on the same principle that a good government is good economics, and both work. So for the country, whatever is good, you will find that everyone in the industry needs to participate, because to be job creators and then to be also lifting the country up. I think that it requires not just what the government is doing in the budget, but what they can enable and unshackle industry to be able to do, because we do need to be able to create more factories, more jobs, more labor intensive work, create those in the cities, in the rural areas, and I think that's what the government looks at. So if you look at the way that agriculture, for instance. That's right, ma'am. And also expectations are there that the focus of this budget would be agriculture, that would also propel the industry. It's a good thing, because I think that agriculture requires, and CII has actually recommended, just like GST, let's get an empowered group of all the agriculture ministers, create an environment where the farmers will be more productive, where they will get paid correctly for their crops, where nothing goes waste. And for all these, and so the markets have to be also made. And so for this whole thing, you do need the government, and you need the private sector, and you need empowerment on all sides, because India's
base is agriculture, and we all recognize it, and we actually celebrate it, and we have to push this. Big infrastructural push is also expected. Has to be. You know, we added it up. India needs to spend $1 trillion. Actually, we need to upgrade cities, we need to create new cities, we need to create roads, ports, airports, the multiplicity and soft infrastructure of education and healthcare. All these are going to cost money, but it also is a big opportunity, and that's how we can all win in this. Now, that was CIA President Shobhana Kamineni telling us about how job creation is important to agriculture as well as infrastructure. Mr. Jindal, you know, you've been someone who's been propagating job creation and said that job creation needs to be taken to the next level. What can we expect from this budget, and how do we bring in more jobs? I have very high hopes for government's focus on job creation schemes, and to announce some measures how to increase this job creation thing, which is the need of the hour. Everybody is feeling there has been a lack in the last 3 years or 4 years of governance. Job creation could not happen so much, but now it is high time it should happen now. And ease of doing business, the focus from the government will also help by decontrolling the things, decontrolling the businesses, that the businesses will flourish and more jobs will be created. Too much controls is also not very good for business, and if like land acquisition etc. happens and they can do more on infrastructure, which is not happening, the amount of progress is required on infrastructure front also due to non-ability of acquisition of land. So all these things will, when they work in together, they will bring lot of possibility of job creations, and to fuel this growth what we are going through, I think more and more jobs will be created, and especially as rightly said by my co-panelists, SME sector, small and medium, and this leather industry and textile industry, they can create lot of jobs if we promote them more. And it is the need for foreign countries also. We will be able to sell much better there if we are able to create more jobs here and create more products here. Ashwani Kumar, should the focus then be on SMEs and MSMEs? Obviously, because we know that agriculture and small and medium enterprises sector can create job a lot, and I think that is required right now in the economy. Particularly large sector, maybe manufacturing sector is required in the economy, obviously, but in these sector, I think the employment elasticity is comparatively low. So we need to boost these small and medium enterprises, and for this investment, to revive investment, I think large investment is required for infrastructure sector, particularly in social infrastructure and physical infrastructure. Both are required for that. You know, the government has put a lot of impetus on you know, entrepreneurs and small scale industry. So can we expect something for them from this budget? I think what we can expect here, maybe some tax rebate for entrepreneurs, it is possible, or some fiscal measures can be taken in this budget for entrepreneurs. Ease of doing business is good right now in the economy. Even students or some people want to go for entrepreneurship. Like we've been given a thumbs up by the World Bank. Obviously. So in that way, I think economy is ready to become an entrepreneur-led economy rather than state-led economy. And we have shifted towards this state-led economy to entrepreneurship-led economy. And I think it's good for economy. In this budget, we can expect some sectors particularly, or some areas where we can provide some boost to these sectors, and particularly if we can provide cheaper funds, maybe Mudra scheme can be extended, more funds can be allocated to the Mudra scheme, or some other factors, other areas. क्या अश्विनी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्योंकि रूरल अर्बनाइजेशन की जब बात हो रही है, स्मार्ट सिटी योजना जैसी कुछ और स्कीम्स स्टेट ड्रिवन शुरू करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस हो सकता है, या सेंटर फंडेड स्कीम, या फिर दोनों की हिस्सेदारी के साथ वो एक बेटर ऑप्शन होगा जॉब क्रिएशन को लेकर भी और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर? बिल्कुल सही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बहुत जॉब क्रिएट करता है, और जहाँ पर अनस्किल्ड वर्कर की बात है वहाँ सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट होती है।
और इंडिया में उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आप जॉब नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, आपको अलाइड सेक्टर में जाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ चाहे वो फिशरीज हैं, चाहे वो उससे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, डिसेंट्रलाइज करना। तो जहाँ तक स्मार्ट सिटीज़ की बात है, ऑब्वियसली उसके इन्वेस्टमेंट में हम सब वेलकम करते हैं, वो सब होना चाहिए। लेकिन जो टियर 2 सिटीज़ हैं और हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करवा पाए, अगर 70 ईयर्स के बाद भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं रोड और इलेक्ट्रिसिटी के बिना, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना वहाँ पर कोई एंटरप्रेन्योर बन पाएगा? बिल्कुल, ये कड़वा सच है कि 6 दशक के बाद हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स में, मेडिकल में, एजुकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जब हम इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बहुत पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं जो बिजनेस को उतना बूस्ट प्रोवाइड करती हैं। प्राइवेट सेक्टर उतना इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं कर सकता है, तो वो प्रायोरिटी है और होनी भी चाहिए वो उधर की तरफ। और पिछले 3-4 बजट से हम देख रहे हैं कि उधर इन्वेस्टमेंट है काफ़ी, तो रूरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिवाइव करने की रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्टमेंट को अगर रिवाइव करना है तो रूरल इकोनॉमी में वो ग्रोथ लानी होगी, क्योंकि वो जीडीपी में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। मिस्टर जिंदल, रूरल इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए और कैसे उनको ये कहा जाए कि आप यहाँ पर कुछ कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ की तस्वीर बदलने में सरकार के साथ खड़े हो जाइए, क्या जरूरत है वहाँ पर? उसके साथ जोड़ने के लिए अगर रूरल सेक्टर में कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं अच्छे, कारगर, वायबल, तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप जुड़ जाएगा वहाँ पर। उसको वायबल बनाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी स्कीम को इतना वायबल बना दें कि लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाएं उसके साथ। और रूरल मार्केट बहुत बड़ा है, अगर हम ये क्रिएट कर पाते हैं तो उस सेक्टर का विकास बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। बिजनेस तो फिर वहाँ आ ही जाएगा अगर वो स्कीम्स उसकी इतनी वायबल होंगी। अब क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो वायबल नहीं है, वो बॉटलनेक क्रिएट करती हैं। वो बॉटलनेक को हटाना पड़ेगा, उससे मैं समझता हूँ कि वो कनेक्ट बन जाएगा और फिर वो डेवलप हो सकेगा। पोटेंशियल वहाँ सबसे ज़्यादा है। जो मेन सिटीज़ हैं उनको अगर उनसे बाहर निकलें तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वहीं पर आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है। हाउ डू वी टैप दिस पोटेंशियल मिस्टर जिंदल? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर ही होगा। वो स्कीम्स इस तरह के होने चाहिए जो उनको उस तरफ अट्रैक्ट कर सके। जो उनकी ज़रूरतें हैं प्राइवेट सेक्टर उनको पूरा करे और वो पूरा करने में वो अपने लिए भी कुछ बचा सके। ऐसे स्कीम्स होने पड़ेंगे जो दोनों मिलकर के वो उसको कर सकें। और फोकस अगर उस पर आता है तो काम तो बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ निकल ही आएगा जब उसके ऊपर फोकस आएगा तो। Ashwani Kumar, when privatization is not picking up, when the government itself has addressed it as a concern area, what needs to be done to boost private investment? I think monetary space is not there. Obviously, we cannot reduce rate of interest. We cannot expect rate of interest to fall right now. So especially with the NPA problems. NPA problem, with rising inflation also, because real effective rate of interest is comparatively now, we can expect that it's not so much high in that way. So I think fiscal expansion is required, but again fiscal deficit is a big concern, and I think I also feel that government can create some additional space, because in future, maybe what I feel in next year, because stabilization of GDP and broadened base of tax regime, I think we can generate more resources. So we need to spend more amount on two things. One, the physical infrastructure, but I already talked about that one. For social infrastructure, I think we require investment now, particularly in education or health sector. So is the onus then on public funding till the private investment picks up? No, I think it's not that private investment is waiting for government investment only. Demand is picking up, particularly in the world market is growing at a faster rate now in the economy. So export sector is also growing, and demand is picking even in Indian economy. But some sectors there are some problem, and I know that particularly because of GST some disruptions were there in the supply side factors. But we are trying to remove it, and implementation will be smooth even after some of the time. And what I feel, you spoke about sectors. What are the sectors that we need to watch out for? I think construction sector, agriculture, mainly infrastructure sector, particularly irrigation facilities, as Sir said that private sector is ready to invest in these areas,
but can you provide electricity for 24 hours? Otherwise, they cannot buy a sprinkle set or all these things. They cannot invest in these areas. If you provide, so the basics need to be taken care of first, and only then can you expect private investment, is what you're suggesting. Okay. अश्विनी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, हम पार्लियामेंट भी चलेंगे। आपकी 3 बड़ी प्रायोरिटीज क्या हैं जिस पर आप नजर रखेंगे आपसे कुछ देर के बाद जब बजट आएगा? मुझे लगता है डिमांड जहाँ तक क्रिएट करने की बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर है इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करने के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं उसको रिवाइव करने के लिए, इसलिए उस सेक्टर को कुछ पैकेज दिए जा सकते हैं, उसको डिमांड को रिवाइव किया जा सकता है। और जहाँ तक रूरल एरिया में और टियर 2 सिटीज़ में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएँ तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर होगा। एक्सपोर्ट सेक्टर में मुझे लगता है अभी बहुत पोटेंशियल है आने वाले कुछ टाइम में। अगर करेंसी हम एप्रिसिएशन से बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते और बजट उस चीज़ को नहीं कर सकता, थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका, लेकिन एक्सपोर्ट में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट को उधर मूव करना होगा। और एक पॉजिटिव जो मुझे लगता है कि जिस तरह से सर्विस टैक्स इंक्रीज हुआ है, सर्विसेज हमें बहुत लॉन्ग रन में बहुत रेवेन्यू हमें प्रोवाइड करेंगी, तो सर्विस सेक्टर पर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी तक आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज अपने आप ग्रो किया है उन्होंने बहुत कुछ इतना सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन अब रिक्वायरमेंट है कि इंटरनेशनल मार्केट में आप एक्सपोर्ट को, चाहे वो गुड्स में हो या सर्विसेज में हो, अगर सपोर्ट हम प्रोवाइड करवा पाएं तो इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर होगा। You know, you spoke about the IT sector. Neelu Vyas, our correspondent, is joining us on the phone line from the IT hub of the country, Bengaluru. Neelu, what are the expectations from the IT hub of the country? Indeed, Frank, there are lots of expectations, and remember, Bangalore is the IT hub, and this is one sector which really has a hallmark of putting India on the international standards and saying that, look, India is competitive. But the genuine concerns which are emerging right now is that how do you really make, in the wake of increased digitization, how do you really expand the services in rural areas? Then how do you entirely the approach towards the IT services? These are a few things which the people really here are mentioning, and they are looking for an increased investment in e-commerce, healthcare, education. They're also expecting that probably the tax slabs would be reduced. Of course, improvement in the tech infrastructure, that also remains a major concern. And data security, of course, is another concern. And they are really expecting that Finance Minister really could make some policy pronouncements on these. But remember, amidst the protectionist tendencies which are rising, when America says that first America, and India talks about make in India, then IT sector people are really worried that where is the meeting point? How would you really save the high-end white-collar jobs, because the focus still remains on the labor-intensive products. So these are a few concerns which are really emerging, and of course, lots of expectations from the Finance Minister today. All right, Neelu, thank you for joining us there with those details. You know, a lot of expectations, Ashwani Kumar, from the IT sector. Can we expect some change in the corporate tax? I think we have to move in that direction if you want to make our industry competitive, because US has reduced tax rate from 35% to 21%. So obviously we should move towards this direction. Not maybe I'm not saying that right now we reduce drastically, but the roadmap should be there to move towards the international competitiveness. Otherwise, we cannot compete with the world. You know, it's almost time, Kavindra. About 5 more minutes to go before, you know, the budget presentation starts in the Lok Sabha. We've all been waiting for this. It's a big day for the entire country. Yes, definitely. क्या बड़ी प्रायोरिटीज जनरल साहब, क्योंकि कुछ ही मिनट बचे हैं अब। मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि जिस ग्रोथ पाथ पे हम चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ना चाहिए, उसमें कोई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स के बेनिफिट के बारे में मैं कहूँगा कॉर्पोरेट टैक्स में वो 30 से 25 का रोड मैप दे देना चाहिए, चाहे वो इट में भी रनिंग ओवर 2-3 ईयर्स। तीसरा, फिस्कल डिसिप्लिन को कोशिश करके मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो डिसरप्ट हो सकता है अगर हम इस डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे। रूरल डेवलपमेंट के लिए मेरा सुझाव है कि जो हमने ग्रुप अफोर्डेबल हाउसिंग का जो फॉर्मूला निकाला था, अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो स्कीम्स लगाए थे उसको जो बूस्ट दिया था, उसी तरह का कुछ हम रूरल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए उस तरह का कोई स्कीम ला सकते हैं, जैसे कि रूरल अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हमने किया था। बोल्ड लॉन्ग टर्म स्टेप्स होने चाहिए जो कि सर्टेनिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ होने चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास हमारे इसमें बना रहे, और उन सब चीज़ों से मैं देखता हूं कि हम अगले लेवल पे जा सकेंगे। जी, एक सवाल अभी मेरे अश्विनी,
सरकार बचत को बढ़ावा देने की तरफ बढ़ती नजर आएगी उसमें, या फिर आप कंज्यूमर के तौर पर खर्च ज़्यादा करें, इस दिशा में कुछ कदम? कंज्यूमर के तौर पर ज़्यादा खर्च करें, मुझे इसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकते हैं हम अब। वो जीएसटी काउंसिल करती है। डायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ा डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने की पॉसिबिलिटी है, पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं उसमें नहीं है। तो कंज्यूमर साइड में हम उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक इकॉनमी की बात है, मुझे लगता है ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो रहेगी वो इन्वेस्टमेंट साइड में रहेगी। सेविंग बढ़ाने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम हेल्थ और एजुकेशन पर ज़्यादा स्पेंड करें गवर्नमेंट, और उस सेक्टर से विड्रॉ ना करे, उसमें स्पेंडिंग इंक्रीज करे, तो ये पॉसिबल है कि हाउस होल्ड की सेविंग बढ़ सकती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए या एजुकेशन सेक्टर के लिए किसी की इनकम का मेजर प्रोपोर्शन अगर उधर जाता है तो वो सेविंग बहुत कम कर पाएगा। तो अगर इकोनॉमी की हाउस होल्ड सेविंग एक्चुअली इंक्रीज करनी है, तो एक जो मंत्र है जो उन्होंने भी, सर ने भी कहा कि जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत हाई होनी चाहिए, उसके साथ सेविंग अपने आप राइज करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा, सोशल सेक्टर्स पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, पर्टिकुलरली हेल्थ और एजुकेशन पर, तो हाउस होल्ड की सेविंग राइज करेगी। कोई यूनिफॉर्म एक स्कीम हेल्थ को लेकर, या फिर एक जो बेरोजगारी भत्ते की बात हो रही थी, चर्चा थी कि शायद कोई एक मिनिमम यूथ को लेकर कोई एक स्कीम शायद गवर्नमेंट इस बार कुछ लॉन्च करे? हो सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। बेरोजगारी भत्ता किसी भी तरह की समस्या का समाधान नहीं। वो ठीक है, एक थोड़े टाइम के लिए आप उनको इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जॉब तो क्रिएट करनी पड़ेगी इकोनॉमी में, और जॉब क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करना पड़ेगा, सेविंग को मोटिवेट करना पड़ेगा इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट अगर रिवाइव होती है तो जॉब तो उसका आउटकम है, जॉब अपने आप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो पैलिएटिव मेजर्स हैं कि हम एक शॉर्ट टर्म मेजर लेकर के चलते हैं कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, या इस तरह से हम सोच करके चलते हैं, तो वो शायद मैं एक्सपेक्ट इस बजट में नहीं कर रहा हूँ। जितना पिछले 4 साल में जेटली जी का ट्रैक है, वो इकोनॉमी को डेवलपमेंट मोड पर रख करके चलते हैं, और इसमें कोई टकराव नहीं है कि अगर सुधार है इकोनॉमी में तो लॉन्ग रन में इकोनॉमी को फायदा ही होगा। You know, about just few minutes away now, how is this budget going to be different from the others? Maybe in terms of expenditure, they prefer to spend more on 2-3 sectors just to create job, employment, and I think otherwise it won't be so much different. In terms of expansion, will also be there. A bigger budget you can expect this year particularly. For last 4 years we have been facing reforms. Now it's time to reward the economy. I think we can expect. What do you mean when you say reward the economy? Reward the economy means you need to increase capital expenditure in the economy. I'm not concerned about fiscal deficit, I'm concerned about revenue deficit. If you can cut down some revenue expenditure and increase capital expenditure, then that can boost the economy. और क्या रिवॉर्ड इकोनॉमी के साथ रिवॉर्ड पीपल भी कुछ? रिवार्ड में देखिए, वो जहाँ डायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ा रिवार्ड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि टैक्स बेस आपका थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस में रेवेन्यू में अनसर्टेनिटी है अभी, तो उतना रिवार्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इकोनॉमी को रिवार्ड जरूर मिलेगा। फ्रैंक, क्लोजिंग, क्या फोकस तुम्हारा रहेगा? बजट जो आने वाला है कुछ 1-2 मिनट के बाद शुरू होगा। I think the economic survey has laid it out all well for us. I mean, you know, the focus is clearly going to be on job creation. It's going to be on agriculture, and it's going to be on education. I think that these will be the big key focus areas. And let's not forget, Kavindra, it is the last full budget. So all pre-election budgets right from 1988. I'm going to stop now because we're cutting across live to Parliament where the proceedings are beginning.